dear student, in my last video we discussed outbreeding devices, that is contrivances for self and cross pollination. Today we will discuss pollen pistil interaction. So before see pollen pistil interaction, we just revised our topic. The sexual reproduction process complete in the 3 steps: pre-fertilization, fertilization, and the third event is post-fertilization. In pre-fertilization, we see the development of male gametophyte, structure of anther. फिर उसके बाद हमने देखा मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज अ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल gametophyte. फिर हमने देखा पॉलिनेशन, देखा पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन. फिर हमने लास्ट वीडियो में देखा कॉन्ट्रोवर्सीज फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ये जो सारे हमने पॉइंट स्टडी किए हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. अगर 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 पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जा गिरता है तो वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा को अनुरूप होगा, तो ही उसके अंदर पोलन ट्यूब ग्रो होगी. अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा को अनुरूप नहीं होगा तो पोलन ट्यूब स्टाइल के और स्टिग्मा के अंदर ग्रो नहीं होगी. ये जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट आज हम देखने वाले हैं. उसका नाम है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. चलो देखें क्या है ये कंसेप्ट. Interaction of pollen grain with a stigma. Deposition of pollen grain on the stigma to the entry of pollen tube in the ovule. ये जो pollen pistil interaction है, ये pollination के टाइम में चालू होगी और fertilization होने के बाद ये complete होगी. As this pollen pistil interaction, it begins with a pollination and end with a fertilization. All the event from the deposition of pollen grain on stigma to entry of pollen tube in ovule, that is up to synergids, it's referred as pollen pistil interaction. The pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. Often wrong type also land on stigma. Pistil or carpel has ability to recognize and accept only right और compatible. Compatible का मतलब है अनुरूप पोलन ग्रेन ऑफ द सेम स्पेसिस. पिस्टिल और कार्पेल के अंदर एबिलिटी होती है जो पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर सकती है, वो स्टिग्मा के लिए अनुरूप है या नहीं, ये पिस्टिल आइडेंटिफाई कर सकती है. Thus, the wrong type of pollen is discarded by pistil. So, you can see in this image only the right type of pollen grain, it start developing its a pollen tube through the style. But the wrong type of pollen grain, it does not develop the pollen tube on the surface of a stigma. The compatible का मतलब है अनुरूप. The compatible and incompatible of the pollen pistil is determined by special protein. The compatible pollen absorb water and nutrients from the surface of stigma, germinate and produce pollen tube. अगर अनुरूप pollen
ग्रेन होगा तो स्टिग्मा के ऊपर से वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब्सटेंसेस एब्सॉर्ब करेगा और वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होने के लिए तैयार होगी और जर्मिनेशन स्टार्ट होगा. Its growth through style is determined by special chemical. The stigmatic surface provide essential prerequisite for germination of pollen which is absent in pollen. The pollen tube as it's developed, it's finally pushes it reach up to ovule and enters in embryo sac through the synergids. Before entering the tip of pollen tube, it absorbs watery substance from synergid and this pollen tube its rupture. The content which is present in pollen tube, it is entered inside the embryo sac. So, it also play an important role in sexual reproduction and seed formation. Pollen grain can also be induced to germinate in a synthetic medium. Means in laboratory we can germinate the pollen grain. Sucrose induced pollen germination and the tube growth in vitro. Addition of boric acid facilitates and accelerates the pollen germination. So here in this slide we see if the right type of pollen grain, it is fall on the stigma. This pollen grain absorbs the stigmatic fluid from the stigma and start the germination of the pollen tube. It reaches up to the ovule and then the fertilization phenomena is start. If the right type of pollen grain, it is fall on the right type of the stigma, then there is a germination of the pollen tube. Okay, I think so you understand up to this. Here we completed pollen pistil interaction. Thanks for watching my video. In my next video we see double fertilization. Thank you.